Good evening, everyone. I will request Prakhar to also switch on the video. Thank you, everyone, for joining today's Healing Circle talks. And before we begin the circle, would like to begin with the guidelines. Healing circles are safe havens. They are built on the foundation of kindness and respect. We all agree to listen to each other with compassion and curiosity. We honor each other's unique ways of feeling and don't presume to advise or fix or try to save each other. We hold all the stories shared in the circle within us, and we trust each one of us has guidance we need within us, and we rely on the power of silence to access it. Thank you so much for being a part of this wonderful space which we co-create for each other. And आज हमारे साथ में है प्रखर मोदी. So I would like to introduce Prakhar, and I am Dimple Parmar, your host of today's Healing Circle Talks. Prakhar Modi is a colorectal cancer survivor. He got constipation and he tried numerous home treatments, but it didn't help. They were told it was piles when they consulted a doctor, but the pain persisted. They contacted a doctor again and he was advised to undergo a colonoscopy, but he declined and instead underwent a proctoscopy. Prakhar was diagnosed with colorectal cancer and was shocked as he was not a smoker or an alcoholic. As a part of his treatment, he underwent chemotherapy and radiation. He also had surgery and was fitted with a colostomy bag. He is grateful to a wonderful family and co-workers who have been supportive during the treatment. And today, Prakhar, he's a cancer survivor, a warrior, and after going through the entire treatment, he also has a colostomy bag. So would like to hear from you, Prakhar, about your entire journey. And colorectal cancer, I can completely relate to it because Nitish also had the similar type of cancer. He also had constipation to begin with. He had doctor also diagnosed this as a piles in the beginning, and then it was diagnosed as colorectal cancer. So can relate to it completely because he also had a colostomy bag. So would like to hear from you. आपका जब जर्नी शुरू हुआ था कितने साल पहले शुरू हुआ था और आप क्योंकि आपने पहले उसको डिले किया, आपने नेचुरल ट्रीटमेंट से कोशिश किया कि वो वैसे ही ठीक हो जाए. सो एक हो सकता है कि आपको काफी सारी लर्निंग्स भी मिली होगी उससे. सो वुड लाइक टू हियर योर जर्नी एंड हाउ इट बिगेन. थैंक यू सो मच. ओवर टू यू, प्रखर. Sure, Dimple. First of all, congratulations for your married life. Thank you. Thank you so much. And secondly, last year only I was diagnosed with this cancer, and the surprising part for me was I was not going to doctor because I'm having a frequent constipation because I was previously working in a night shift, so my cycle was very disturbed. After that, here and there, I just tried Trifla and all kind of medicines, and I delayed going to doctor, which actually I used to do every time. So there is a very good learning which I got is don't delay if it is too much. Take medicine on time. Visit to doctor immediately. No cure, no self cure will help you. Else it will damage your body part. And the worst thing is it can be avoided, but there is not a single chance for it because the cancer was residing at the sprinters where we actually hold our motion. So that has been gone. I had a word with my doctor and his assistant, whoever are supporting at the time of surgery. So they told me that you are just 1 year younger to me. So they know that there is a troublesome part for that. So initially after surgery, I was feel little bit having a trouble like वजन नहीं उठाओ, आपको बहुत ज्यादा केयर करना पड़ता है, and the bag itself is a trouble because it is not easy to change. Another thing is I was actually surprised, to be honest. I was a lecturer some time back, so I have a habit of having thoughts for others as well. So what happened, no, when I got this colostomy and when I consulted the doctor, ET nurses, and also there are some reputed brands are there in specifically in India. So that particular 5 days bag will cost you around 1200 to 1500. And I was literally amazed, boss, how someone will manage if he's not financially stable. Because I'm somewhat okay because I was working in IT and can afford it.
I'm not saying that I am too rich, but yes, I can afford it. But that is also troublesome because 1500, 1600 is way too much for a 5 days thing. And if a ET nurse is coming, they charge for their visit as well. So that is another thing. Even I have a thought of starting something for others as well, but due to my health again, it is troubling me. In after a couple of months, I again admitted to hospital because there is a stoma blockage. So now, if you're not aware what is stoma blockage, I'll tell you. Even if I eat cashew or nuts or anything, and I can't chew it proper, and if I'm not chewed it properly, then it will block my stoma. And stoma blocking is a life threatening because you can't pass your motion. So if you can't pass your motion, your intestine will someday blast. It is something like that. So I'm admitted for 3 days. Doctor did take care of me in Pune and all. And after that, again, I started my journey in my office. So that is one thing. Second, uh, I have skin rashes because when you stick the stoma bag on your skin, uh, definitely there is a glue, and if you don't take care of skin, it will give a lot of trouble. Most of the people are not aware that if they have sigmoid type colostomy, they can go ahead for irrigation and all, and after the irrigation, at least your life is somewhat smooth and you don't have to rush to loo every time. Just like today, on a daily basis now I am doing so. For approximately 12 to 15 hours I am free from motion. So in the morning I have fixed the time that okay, on around 7 to 8 o'clock I have to use the loo and complete everything, and after bath I came out. So now there is no sticking bag and all, and I can put a gauge on my stoma and I can proceed. So, and other thing is what I feel is, apart from any other cancer, bladder cancer, rectum cancer is the worst, because those every part of body is too much important for you. This I realize. The second thing is this particular thing, why it is I'm saying that this is the worst cancer, because uh, there is no alternative for it. You have to survive with stoma bag. And it is there are chances that it may get leak. There are chances that the person who is sitting with you might get smell. So it is something which makes you embarrassed as well. And apart from that, I can't uh, take my kid in my lap, because I have been strictly advised that I shouldn't carry weight more than 4 kgs. Now you can imagine that I have been restricted to that. But I actually didn't listen to doctor, and now I have been diagnosed with umbilical hernia. So doctor told me, now stop avoiding any kind of weightlifting. So I did that now. But my daughter is just 2 years old, and she used to come to me, so can't avoid it. That is how it is. So like these are the things which are there, and most of the people, I guess, are not aware about it. That these type of cancers exist in India as well, because people think that there are only few cancers are there. And I honestly say that even if you have slight constipation, don't delay for more than 2 days. If you have frequent one, go ahead and check with your doctor immediately, because else your life will get real hell. And if your partner, if your friends are not supportive to you, you're gone case, man. My wife is literally helpful to me. She actually helped me. Even she is ready to clean everything whatever I did, but I say no, I will do it myself. It's not your job right now. So these kind of stuff may occur in your life. So it is there. I have been associated with one association, so they have their own healing sessions and all. They support poors as well. So in a very smaller chunk, they used to support because they have their limitations as well. So that's all from my side. Thank you. Thank you for sharing how your journey with colostomy began. So, Prakhar, जब आपका diagnosis हुआ था, and you said that you had constipation. So, can you please share आपको क्या-क्या side effects और symptoms face हो रहे थे उस समय जब आपका diagnosis हुआ था? ओके, सो स्टार्ट करता हूँ. जस्ट लॉकडाउन लगा था. मी एंड माय वाइफ जस्ट केम बैक फ्रॉम वन ऑफ द मैरिज, मतलब एक शादी थी मेरी वाइफ के साइड पे, तो मैं वहां से रिटर्न आए. एंड देयर इज अ ट्रेंड गोइंग ऑन द फेसबुक, ट्विटर, दैट एवरीवन इज प्रिपेयरिंग समथिंग, putting on Facebook and all.
So my wife is also an enthusiast for it because we have a cook and she never did much of cooking at that time. But this gave us opportunity that me and my wife both can go and cook in the kitchen and all. तो उसमें वो बनाती थी, we used to it. धीरे 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 I have stopped dinner. मैंने डिनर कंप्लीटली बंद कर दिया था. तो एक दिन मेरी वाइफ फ्रस्ट्रेट होके बोली कि जाके डॉक्टर को दिखाओ. आई डोंट हैव एनी पेन एट दैट मोमेंट. तो मैंने कहा यार नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन है, 2 कमरे के घर में बंद हैं, कहीं वॉकिंग नहीं हो रहा है, कुछ मूवमेंट नहीं है, बेड से उठते हैं, ऑफिस लॉगिन करते हैं, अगेन बेड पे जाते हैं. कॉन्स्टिपेशन इज क्वाइट नेचुरल. बट सरप्राइजिंगली when I visited doctor, he inserted finger in my rectum and I have a tremendous pain after that. तो जब वो पेन स्टार्ट हुआ, मैंने अगेन डॉक्टर को कॉल किया. डॉक्टर टोल्ड दैट टेक द पेन किलर अल्ट्रासेट एंड ऑल, एंड आई हैव स्टार्टेड विद दैट. अगेन हफ्ते भर बाद फिर दिखाया बिकॉज पुणे में काफी ज्यादा केसेस थे कोविड के. सो आई वाज एक्चुअली अवॉइडिंग. मेरी डॉटर तब 10 मंथ्स की थी, तो आई वाज मेजर कंसर्न फॉर हर. तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला आपको पाइल्स में फिशर है. फिर ऐसे ही चला. फिर मैंने सेकेंड डॉक्टर को कंसल्ट किया, उन्होंने भी फिंगर डाला. तो मुझे काफी मतलब काइंड ऑफ ब्लैकआउट हुआ था उस समय पे. तो उन्होंने कहा कि देखो आपको कुछ तो है अंदर इशू, वी हैव टू गो फॉर कोलोनोस्कोपी. उसके पहले आप ब्लड टेस्ट करा लीजिए एंड कम टू द हॉस्पिटल एंड वी विल डू इट. तो नेक्स्ट डे अगेन जब मैं ब्लड टेस्ट के लिए जा रहा था, somehow I forget the mask. This is something really interesting. So I visited nearby medical and वो medical वाले भैया से मेरी बहुत अच्छी friendship हो गई थी because मेरी wife के maternity के time I take medicines from there. So it was like he is always ready to help me. So उन्होंने बोला सर आपके पाइल्स का क्या हुआ, how is it? अभी ठीक है, मैं आपको उन्होंने मुझे आयुर्वेदिक मेडिसिन भी दिया था. तो मैंने कहा नहीं सर, ऐसा ऐसा बोला है कि कोलोनोस्कोपी करा लो. तो जो मेडिकल वाले भैया थे उन्होंने बोला सर डॉक्टर तो अभी लूट रहे हैं, आप थर्ड डॉक्टर को कंसल्ट करो. बिकॉज अगर उन्हें लग रहा है कि आपको पाइल्स है तो पाइल्स का ट्रीटमेंट होना चाहिए, फिशर है तो फिशर का ट्रीटमेंट होना चाहिए. कोलोनोस्कोपी इज कम एट द एंड, नॉट एट द स्टार्ट. तो पास में ही एक डॉक्टर है, हिज रेटिंग इज वेरी गुड ऑन गूगल. तो आई वेंट एज पर गूगल एंड वहां पे उनका वेट किया. उन्होंने प्रोक्टोस्कोप डाला एंड 2 मिनट्स के लिए आई वाज लॉस्ट. आई डोंट हैव एनी सेंसेस इन माय बॉडी, इतना ट्रेमेंडस पेन था. देन डॉक्टर टोल्ड मी आपके साथ कोई आया है. मैंने नो सर. तो बोले आपको 100% एक्सेस ग्रोथ है, 99% कैंसर है. एंड आई वाज फ्रीज लाइक दिस, आई डोंट नो. एंड आई एम एक्चुअली इन ट्रॉमा एट दैट मोमेंट. तो फिर वहां से उतरा, पापा को कॉल किया, पापा ऐसा ऐसा हुआ है. पापा ने कहा तू तो सब छोड़, आ जा वापस होम टाउन. एक्चुअली मेरे अंकल डॉक्टर हैं इंदौर में, तो ही एक्चुअली अरेंज अनदर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हु कैन ट्रीट मी बिकॉज मेरी फैमिली में देयर इज नो कैंसर हिस्ट्री. तो एक तो ये प्रॉब्लम हुआ. फिर जब इंदौर पहुंचे तो इंदौर में मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ. नेक्स्ट सैटरडे मैं इंदौर पहुंचा. संडे को मेरा डॉक्टर से मीटिंग हुआ. मंडे को मेरा कोलोनोस्कोपी हुआ. Wednesday I have a report that I have adenocarcinoma, and after that ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ. मुंबई में एक डॉक्टर, पापा ने पूछा, जो अंकल हैं हमारे डॉक्टर, उनसे पूछा कि हु इज द बेस्ट डॉक्टर, अगर कुछ भी हो सकता है तो उन्होंने कहा कि लीलावती में डॉक्टर पी जगन्नाथ इज द बेस्ट. तो उनसे बात हुआ. उन्होंने कहा कि डोंट वरी, इट विल बी गो, यू विल बी सेफ, डोंट वरी एंड ऑल. टिल द टाइम डॉक्टर डिडंट टेल एनीथिंग अबाउट स्टोमा बैग. मेरी फैमिली में एक पर्सन को है, डिस्टेंट फैमिली में, बट उनको दूसरे रीजंस की वजह से उनका इंटेस्टाइन एक्चुअली पूरा डैमेज हो गया था. तो उनको लोअर इंटेस्टाइन में है, स्मॉल इंटेस्टाइन में. बट आई हैव नेवर हर्ड अबाउट इट एंड कभी किसी ने बताया भी नहीं. मीन्स इट वाज उनके साथ ऑलमोस्ट 30 ईयर्स से है. तो जब उन्हें पता चला, मुझे पता चला बाद में कि बैग लगेगा, तो थोड़ा सा बुरा लगा. ये था कि बैग ना लगते हुए नॉर्मल कुछ हो जाता, अल्ट्रा लो एपीआर हो जाता, चल जाता. बट जिन डॉक्टर ने मुझे कहा था जस्ट 1 ईयर यंगर हो, उन्होंने कहा डोंट गो फॉर अल्ट्रा लो एपीआर बिकॉज आपका लाइफ उसमें और ज्यादा मिजरेबल हो जाएगा. बिकॉज आपको मोशन कंट्रोल बिल्कुल नहीं होगा. द मोमेंट यू हैव टू फील टू गो टू लू, यू हैव टू रश इट इन 2 मिनट्स, एल्स योर आपके कपड़े खराब होंगे.
So like this things has been happened with me. Got it. Completely understand with this entire journey. And मुझे एक question था जब आपका diagnosis हुआ था, before it was cancer, you were trying many home remedies. So Yes, just want to understand your thought process कि आपने, because we also know that it's risky at the same time. So home remedies आप कर रहे थे before you got to know it was cancer, and what was going on in your mind at that time? Because आज भी कई लोग ये करते हैं और ट्रीटमेंट या डायग्नोसिस डिले होता है और कैंसर स्प्रेड होता है. करेक्ट. एक्चुअल में मुझे फ्रीक्वेंट कॉन्स्टिपेशन बहुत पहले से है, मतलब इट्स नॉट लाइक दैट. द टाइम आई लेफ्ट होम, मैं पहले कोलकाता था 6 months, तो कोलकाता में भी मुझे काफी ज्यादा गैस्ट्रिक इश्यूज हुए थे. विद इन स्पैन ऑफ 2 weeks आफ्टर लीविंग होम मुझे स्टार्ट हुआ था. तो मेरी ग्रैंड मदर यूज टू प्रिपेयर वन चूरन. So I used to take it and everything is sorted for me because it will flush out everything and it is like that only. So 6 months वहां रहने पे भी मुझे थोड़ा बहुत ठीक था. Means I'm telling you about 10 years back. So like this is it started, and cancer is not 1 day spread or 2 day spread. It is negligence from a long time. First thing. Second thing, it is not easy to diagnose the rectum cancer because people might think it is piles and fissure, which I very well understand now. So what happened now? कि फिर बैंगलोर गए, बैंगलोर में भी सेम प्रॉब्लम था. बट मेरा मेजर बॉडी डिग्रेड स्टार्ट हुआ व्हेन आई वाज इन नाइट शिफ्ट. एंड एक्चुअली नाइट शिफ्ट की वजह से मेरा साइकिल पूरा बिगड़ा हुआ था खाने का. एंड उसके बाद फ्रीक्वेंट कॉन्स्टिपेशन होना स्टार्ट हुआ. तो आई हैव स्टार्टेड टेकिंग दैट पाउडर, उससे थोड़ा ठीक होता था. फिर आई स्टार्टेड गोइंग फॉर त्रिफला, isabgol, and all sort of thing. Even I consulted one doctor who works in homeopath. So she also given some medicine, but nothing worked out at that moment because it is a cancer, and I am doing the wrong medication for it. So that's it. Got it. Definitely. In fact, lifestyle plays a very, very important Yes, role. true. Any disease, not just cancer. And as you were talking, and I was relating this with Nitish's journey, because when he was being diagnosed 6 months before that, even he had a very irregular lifestyle. रात भर जगना, स्टार्टअप है, सोना भी नहीं है, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा था, खाने का टाइम टेबल नहीं है, or lot many other things. He was withholding his emotions also. And what I have seen many times with colorectal cancer, especially when people don't really share things outside, they keep many things within themselves, and somewhere thoughts starts accumulating in your body. Correct. Similarly, they say that the body has psychosomatic relation. So your mind, the way it works, it also affects your फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑल्सो इन द बॉडी. सो उसकी Correct. वजह से कॉन्स्टिपेशन भी होता है, आपकी चीजें गंदगी अंदर एक्यूमुलेट होती रहती है. That's what happened with Nitesh for almost 6 months, and later he was being diagnosed as colorectal cancer. So very, very important to follow a good lifestyle, and Correct. sleeping habits, healthy eating. It's this all very, very important. When you said कि मुझे constipation होता ही रहता था, and this is a very common thing. नितेश को भी कॉन्स्टिपेशन होता रहता था, एंड दैट्स व्हाट अल्टीमेटली आई हैव सीन दैट दीज आर कॉमन सिम्टम्स. नाउ नॉट नेसेसरी कि हर कॉन्स्टिपेशन वाले को कोलन कैंसर Yes. होगा, बट व्हेन यू नो दैट यू हैव रेगुलर कॉन्स्टिपेशन होता है, देन इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप ईयरली कोलोनोस्कोपी करवाएं, या फिर जो भी Right. आपकी एज के हिसाब से डॉक्टर ने एक एज के हिसाब से कोलोनोस्कोपी करवाने की फ्रीक्वेंसी डिसाइडेड होती है. दैट कम्स अंडर कैंसर प्रिवेंशन और स्क्रीनिंग टेस्ट. रियली इंपॉर्टेंट टू डू इट, बिकॉज जो स्टार्टिंग में जो डेवलप होता है, if we are able to catch it early, which is first or second stage, then it can really save lives. So thank you. No, Dimple. I counter on this. I'm sorry. There is no staging concept now nowadays. So the thing is, doctor has started grading in the stages as well. Hmm. So the lymph node which got impacted based on that, because I have second stage, that is 4.5 centimeter of tumor was there, but the region which it has spreaded, it is completely damaged. Doctor told that only 1 centimeter was remaining at that time, and it is impossible to stitch it. So if I say this, that if you have second, if it has been detected initially, it's not
converted into the cancer, then your life is somewhat safe. Even if it is at the first or the second stage, but your grade is lower, you might save your rectum. So I'm just saying this because this is what I learned from the doctor right now. Right. So, Prakhar, staging is always there. So, fourth stage is Yes, when it metastasizes to other organs, yes, and yes. third stage is when it goes beyond the local region, Correct, and also correct, in the surgery, doctor gets to know if the lymph nodes are positive or negative. Like correct, in Nikesh's case, 3 out of 15 lymph nodes were positive, hence doctor advised for chemotherapy also. So, in correct. this case, it was almost 9 centimeter long tumor, and that was Mhm. at the edge of the rectum, जहाँ से आपने Correct. वैसे के वहाँ पे था, इसके लिए doctor had to remove the rectal region as well Yes, for him. So in his case, it was late stage of third stage. So third का yes, भी advanced वाला था, which was about to go to fourth. And then after yes. going through the entire treatment, radiation, surgery, and chemotherapy, with the treatment, the disease relapsed and spread to lungs and other areas. Correct, And then it correct, became fourth stage. Yeah. correct. So in my case, it was, I guess, second stage and the fourth grade kind of thing, Yeah. because it is just about to convert to third stage. 4.5 centimeter is like if you have 2.5 to 2.5 to 5 centimeter, it is second stage. The moment it is crossing 5 centimeter, it is converted to the third stage, first grade. Got it. So, Prakhar, now we are talking about it very comfortably, very easily. But जब होता है तब it's difficult. And why I'm sharing this, because last week I had a dream where I was diagnosed as cancer. So that dream was a nightmare for me. And when I got up in the morning, and I was like, oh my God, what I just felt. And I have shared with Kishan that I had a dream that I had cancer, and then the immediate thing was ki before it spreads, these are the things I need to do. And that's what I was discussing with doctor in my dream. And you have gone through the similar journey. So what were you, what all things happened to you? What all thought process were coming in your mind for that 1 year of treatment phase? See, my chemo radiation was very short span of time, that is approximately 25 days. So my chemo started at the day of my marriage anniversary. So the worst thing is chemo is the real troublesome part. It is nothing but just an antibiotic of higher dose. So I was taking oral chemo, not the saline one. So my chemo was around 2000 mg morning, 2000 mg evening, and there are other pills as well. So my body become red, completely red. And sometime I used to take off complete clothes, and I was like, "Don't come near me. I'm right now on fire." एंड ये सब जुलाई के मंथ में था, एंड जुलाई का मंथ जो होता है एमपी में, वहां पे बारिश रहता है, लेकिन उस टाइम पे वहां पे गर्मी बहुत था. तो आई वाज हैविंग ट्रेमेंडस हीट. So I better suggest, if you face a little bit issue and if you are little suspected, there is no harm in spending money, and go ahead and check with the doctor immediately. It's okay to spend 20-25,000 on your body yearly, because it will save you from a major disaster which cost you complete life. Because if I say now I have to follow 5 years of colon protocol, like I have to go every 3 months for a regular checkups, like sonography, ultrasound, blood checkups, every 6 months or 1 year colonoscopy, CT scan. So these things are not covered under insurance and anything. Specifically, touch wood, I have a sigmoid colostomy. I'm just finding it great because I have seen people who don't have sigmoid. Sigmoid means you have a colostomy, and there is a people who have right side, means small intestine cancer. So when you have that, you can't do irrigation. And another worst cancer is the bladder cancer, because there also you can't do anything. So these kind of cancers will give you a lot of trouble, because those bags cost a lot, everything, and nothing is covered under insurance. You have to pay everything from your pocket. So I feel that 20-25,000 is okay if you yearly go and check your body regularly after 25 at least. Because generally now the trend which doctor told me has came, that because of the poor lifestyle in youngster, uh, we have seen so many cases in 25 to 35 range of people. So it's like that. And specifically for women I will tell, because
there is a lot more trouble than men, which I actually felt uh, associating with that association. And even when auntie was there at the same time, she also diagnosed with the same kind of cancer, and her uh, uh, operation was just after 10 days time gap was there. So she told me that there is a lot of trouble for her, because लेडीज के साथ दूसरी दिक्कतें हैं, मेंस के साथ दूसरी दिक्कतें होती हैं इसमें, बट इट इज बीइंग देयर. सो आई सजेस्ट invest money. It's you are investing on your body, nothing like that. Save 1,000 rupees at least for yourself, so that you can invest it in your body. Very true. Right, and I think more it's also about awareness around this. So Yes. लोगों को कैंसर का मोस्टली तभी पता चलता है when it it hits you. So Yes. अगर if you get to know कि हाँ XYZ person has cancer, like कि ठीक है, okay, but actual में the journey starts when it hits in your family. And जब नितेश को हुआ था उससे पहले भी I knew that somebody had cancer, but then that's all I knew. And the thought is, okay, how are they doing today? Are they alive? Are they not? But you actually get to know, and time you hear something like this and you become more aware कि Correct. अच्छा ऐसा होता है. And I think that's where these are the stories that inspire people, that also spread awareness around this and gives a lot of hope that if Prakhar can can come out of it, I can too. If Prakhar can go through that journey, I can too. Because Correct. when something like this happens, you really don't know how to behave, how to take decisions, where to go, what to do. Maybe you will get if you're lucky, you'll meet the right doctor and start the treatment. But what about the other ancillary support that somebody needs, about colostomy, about from where to get the right products at the good quality, low cost, many other things, because it's like something that you're gonna go entire life. So counseling around the surgery also, in such as colostomy surgery. So thank you for sharing this and spreading awareness around this. So Prakhar, जब आपका surgery हुआ था, and when doctor told you that they're going to close the part and also they're going to put a colostomy bag, so, and आपका पूरा lifestyle उससे change हो जाएगा. So how did you take that news? इनिशियली एक्चुअली डॉक्टर वीडियो कॉल पे ही डॉक्टर ने बोला था कि 99% मन बना के आना, बैग लगेगा. Only 1% chance is there because आपके स्प्रिंट टेस्ट पे है. And I was like, लगेगा, there is nothing in that. And I am a kind of person जो होगा देखा जाएगा वाला हिसाब है मेरा. तो मैंने, because you can't hold it, आप उसको रोक नहीं सकते. आपका सीधा सा हिसाब हो जाता है कि जब आपका कंट्रोल नहीं है किसी चीज पे, तो लेट इट बी, जो होगा देखेंगे. मींस आई हैव दैट काइंड ऑफ टेंडेंसी इन मी. तो मेरे साथ यही हुआ. बैग लगा. आई माय बॉडी वाज कंप्लीटली इन एनेस्थीसिया. तो नो मूवमेंट वाज देयर. मुझे जब होश आया, मैंने देखा भी नहीं कि मुझे बैग लगा है नहीं लगा. आई वाज नॉट इवन वरी थिंकिंग अबाउट इट. देन डॉक्टर केम एंड से, हाउ आर यू फीलिंग? मैंने कहा बढ़िया. मैंने, सर बैग लगा है? बोले हाँ. मैंने कहा कुछ हो सकता था? ही टोल्ड, भाई 1 सेंटीमीटर बचा था, उसमें मेरे लिए सिलना इम्पॉसिबल था. तो ऐसे ओके, लेट इट बी. देन इनिशियल जर्नी स्टार्टेड, बिकॉज अभी तक आपके लिए क्लीन करने के लिए नर्सेज होती हैं हॉस्पिटल में. बट challenges started when you started get out of the hospital. पहले तो बैग क्लीन करना है. जब वो बैग क्लीन करते हैं तो they use NaCl, that is salt water, जो उनके पास होता है. तो आप थॉट आता है एक माइंड में कि यार ये एक और खर्चा आएगा बैग के साथ. टिल नाउ मुझे बैग के कॉस्ट का नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता कैसे चिपकाना है कुछ भी. तो when I started cleaning it first, it is really troubling for me because I'm not used to it and nobody taught me. Because nurse आती हैं, they used to do it on their own pace and on their own style. उसके बाद धीरे धीरे आई स्टार्टेड लर्निंग विथ माई सेल्फ कि ओके, इसको इस तरह से नहीं, इस तरह से भी क्लीन कर सकते हैं. देन एक फेज आया मेरी लाइफ में कि बैग का कट करके लगाना है. तो व्हेन दैट पर्टिकुलर अप्लायंस, आई जस्ट से टेक अ नेम के लाइक आप कोलोप्लास्ट का या होलिस्टर का बैग या फ्लेंज लेके आते हैं, देन यू स्टार्ट टू कट इट. आपका एक हल्का सा कट आपके स्टोमा को डैमेज कर सकता है, आपका लीकेज हो सकता है. देयर आर अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स अकर एट दैट टाइम, बट आई हैव टू लर्न इट.
I know people जिनको अभी भी नहीं आता, they used to spend 1,000 rupees for a ET nurse visit. And to be honest, India में ET nurse ज़्यादा है नहीं. There are very less ET nurse, and जो हैं they are associated with this kind of companies जो कि अपना ही product sell out करते हैं. They don't care about कितना cheap है, क्या सामने वाले की स्थिति है, whether they are able to pay or not. तो लाइक दिस, अगर आप खुद से सीखते हैं एनी एज, आपकी फैमिली में कोई सीखता है, इट इज फेयर इनफ, आपको इजी पड़ेगा. बट अगर आप डॉक्टर ईटी नर्सेज को हर बार बुलाते हैं, देन यू हैव टू स्पेंड फ्रॉम योर पॉकेट. एंड ये चैलेंजेस आते हैं लाइफ में कि आपका स्टोमा ब्लॉकेज है, तो आपको क्या खाना है वो देख के खाना है. आपको यू शुडंट हैव लिबर्टी टू गो फॉर लूज मोशंस, बिकॉज अगर लूज मोशंस हुआ, आपका रात में बैग लीक कर गया, तो आपका बेडिंग खराब होगा, आपके पार्टनर को अनकंफर्टेबल होगा. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर कंप्लीट लाइफस्टाइल, बिकॉज इट इज नाउ अपसाइड डाउन फॉर यू. यू कांट टेक चांसेस नाउ. Very true. It changes completely. And in fact, when Nitesh got this news that it's gonna be a permanent colostomy and there could be a chance that he get this, and he actually said, and many others do the same thing, that I don't even want to go for surgery, and it's better I die in 5 years than going through this entire journey of living with the bag. So it took a lot of time. He also canceled his OTN surgery, that I don't want to do this. It took us a lot of time to counsel him and also talk to many different survivors who have been living with bag. Uh, and I understand. I also knew that, in the beginning it was challenging for me also to getting adjusted to this new lifestyle of him, because as you rightly said, that there were leakages all this while. We didn't know how to use it properly, how to clean it, how to close it properly. And classroom में कभी उसमें if there is a gas and then वो बैग में भर जाती है, तो then t-shirt is kind of bumpy. So it's very sometimes, for patient it could be very काफी उन्हें गंदा लगता है कि अरे what would people think, that why my stomach is like that, why there is a bulge like that. So living with that with confidence, with it's really difficult. And once, but then yeah, it took some time to get over it. There were smells, there were things like kabhi bedsheet gandi ho rahi hai, kabhi kuch ho raha hai. But then I think most important part here is the caregiver support. And hats off to your wife who have been a constant companion to you, because after this I think patient look at themselves from the caregiver's eyes कि वो मुझे कैसे देख रहे हैं, how much support are they providing. And then it becomes very easy, and they also feel कि अच्छा ये तो बहुत छोटी सी चीज है, because caregiver is thinking acting like that. So मैंने बहुत सारे मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जहाँ पे, and especially tier 3 places, जहाँ पे husband is calling me and saying that मेरी वाइफ को बैग लग गया है, और हम लोग और मुझसे तो वो देखा भी नहीं जाता है, और वो उसमें से बदबू आती है, उसमें ये होता है. इट वॉज अ पैलेटिव केयर केस एंड ही वाज गेटिंग ट्रीटमेंट एट टाटा मेमोरियल. डॉक्टर ने बोला पैलेटिव केस है, आप इसको घर ले जाओ. वाइफ एक्चुअली वॉज इन डिप्रेशन. शी ट्राइड टू कमिट सुसाइड बाथरूम में, एंड हस्बैंड उसको बाथरूम तक भी नहीं लेके जाता था. शी वॉज मैल न्यूट्रिशन ऑल्सो. एंड हस्बैंड इज कॉलिंग मी एंड शेयरिंग दैट कि आप किसी हॉस्पिस केयर को जानते हो क्या, जहां पे मैं अपनी वाइफ को छोड़ के आ जाऊं. अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं गुस्सा करूं, या फिर मैं दया दिखाऊं, या फिर मैं पिटी करूं उसके लिए. एंड आई एम लाइक, वाइफ के लिए तो करना ही है. सो देन कनेक्टेड देम टू हॉस्पिस केयर की, जहाँ पे एटलीस्ट नर्सिंग तो हो जाए उनकी. So lot of stigma, lot of counseling education still needs to be done around this. And the way you shared very comfortably आपके जर्नी के बारे में, it gives hope, it gives courage, it gives a comfort कि ठीक है, बड़ी चीज नहीं है, हम भी इसके साथ रह सकते हैं. कैंसर से निकल गए हैं तो बैग तो क्या ही चीज है उसके सामने. So that type of counseling is really really needed. And there are some doctors I know who have been doing wonderful counseling around this for doctors also, and for patients and caregivers also. So Prakhar, जो colostomy के products आते हैं, they are very expensive. So, and I know few organizations like Ostomy Association and all who are providing at low cost to cancer patients. So can you please share if you have some knowledge information on this, so that other patients also get benefit of it? One is, you told that Ostomy Association. There is one more association which I'm actually trying to figure it out. Doctor told me to reach out them, but I'm not. I'm just associated with them.
एक्चुअल में जो कोलोस्टोमी के प्रोडक्ट्स हैं, मी विद द हेल्प ऑफ ऑस्टोमी एसोसिएशन ऑफ इंडिया वी आर ट्राइंग टू गेट दिस पर्टिकुलर डिजीज अंडर disability. I'll tell why disability, because your body part has been removed. It is not a condition. You can't hold it. It is something like someone has removed your hand, you can't do anything with that. तो अगर ये उसमें आता है तो वी विल गेट सम काइंड ऑफ लिबर्टी, बिकॉज 10,000 के प्रोडक्ट पे हम लोगों को 4,000 का जीएसटी प्लस कस्टम पे करना पड़ता है. तो आप अगर 10,000 के प्रोडक्ट पे 4,000 का जीएसटी दे रहे हैं, मीन्स योर प्रोडक्ट एक्चुअल कॉस्ट इज 6,000. तो एक तो वो चीज अगर हो जाता है. सेकेंड थिंग, हॉलिस्टर के प्रोडक्ट इंडिया में नोएडा में मैन्युफैक्चर होते हैं, बट इट विल गो टू यूएस यूके एंड देन वो वहां से आते हैं, तो हमारा उसके ऊपर कॉस्ट बढ़ जाता है. इन केस अगर इंडिया में ही एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो हमारे पास आए, तो इट विल बी अ वेरी वेल, बिकॉज what I learned from Google is approximately 5 lakhs to 10 lakhs हमारे यहाँ पे अभी एक्टिव ओस्टोमी पेशेंट्स हैं. So the market is huge, and when I read about Coloplast, Hollister, and other one, so I learned that it is a $5 billion market. So they are the what I can say, dominant players in the market. So Got just it. a sec. Got it. So if that will happen, if that's what I told you, know that in the start that I was thinking that how we can start something in India and we can start providing it, but because I was also admitted and I dropped that plan, because I myself alone I can't do anything right now, Of course. because I have to run here and there. My medical issues are also there, but if something help has been provided, just give me a sec. Just give me a sec. There is one call is coming. Surely. Yeah. Right. In fact, Annie did mention about this, that she was in touch with your team, and he said that we can definitely do some good things together. So I was like, okay, we will definitely connect on this later. So after the circle, but thank you, Prakhar. So Prakhar, now that your treatment is over, how are you making sure or ensuring that you are following a good lifestyle, or did you make any lifestyle changes to come on the path of recovery and following healthy lifestyle? Initially I started, but again I went back to lost the track, and again I'm again moving it towards it. Initially I used to take like 3 times meal, low fat diet, low cholesterol diet. I included high fiber in my food and started walking. But as Corona started again, and I was more prone to it because my body is weak right now because of all the things happen. So again, I from couple of weeks I have again started walking for approximately 5 to 10 kilometers a day, because there is no weight lifting and all. Planning to go for yoga now, and again started lifestyle changes like 3 times meals a day, and that too low fat. Avoid oily and spicy food. I can't take spice now. Even my whatever my mom cook, I feel it spicy. I told her, but she told that there is very less spice because I know how she prepared it. तो मम्मी के खाने को भी अभी थोड़ा सा वो करा है कि मम्मी अब मेरे खाना तो बिल्कुल सेपरेट बनाया करो कि आई कांट ईट इट. तो these kind of lifestyle changes needs to be done in your life, else can't help in that. Thank you. Very true. Thank you for sharing this. And in fact, Faisal, he has just shared that I'm very worried about that I lost two family members with cancer. How to stay positive, and we have been a part of the same journey, Faisal. I constantly think about this. Ki it's really difficult. एक ही second, please. Sorry. Yeah. Right. So it's really it's हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि उस फैमिली पे क्या निकल रही होगी. उनकी मॉम को कैंसर था, उनके भाई को कैंसर था, एंड अनफॉर्चुनेटली बोथ पास्ड अवे सो वेरी रिसेंटली. एंड वी वर इन constant touch, and Fazil have been trying all everything possible to give them good life, to
टू इंश्योर कि वो पेन में नहीं रहे, कंफर्ट में रहें। और मुझे याद है कि उनके मैसेजेस आते थे रात को कि आज इतना इमरजेंसी हो गया है, कहाँ पे लेके जाएं, क्या करें। फैजल, रियली हेड्स ऑफ टू यू कि आपने उनको इतना सपोर्ट किया, इतना यंग होकर के, इस एज में। जितना आपसे पॉसिबल था आपने लास्ट टाइम तक उनका साथ नहीं छोड़ा। डू यू वांट टू शेयर एनीथिंग फैजल? Thank you, ma'am. You all time motivate me, ma'am. नहीं, आपका कांस्टेंट एफर्ट्स थे उनके लिए कि, और आपने जो बोला कि हाउ टू स्टे पॉजिटिव फैजल, इट हैपेंस, हो गया आपके साथ में ऐसा। इनफैक्ट मैं अभी 2 दिन पहले ही किसी से बात कर रही थी, एंड जी मैम। वो और उनकी वाइफ दोनों कैंसर सर्वाइवर हैं, बट जी उनकी फैमिली में वाइफ के फादर एंड ब्रदर पास्ड अवे फ्रॉम कैंसर। जो हस्बैंड है उनके नेफ्यू को और वन मोर फैमिली मेंबर हैड कैंसर। सो मतलब हो जाता है, उसके बाद क्या करना है, राइट ट्रीटमेंट, राइट टाइम पे सही चीजें करना। लेकिन सब कुछ करने के बाद में भी शायद कभी कभी सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं होती है। सब कुछ टाइमली करने के बाद में भी शायद शायद लास्ट में कभी क्यों ना भी मिले, बट जर्नी जर्नी कैसी है उस पे हमें कांस्टेंट एफर्ट्स लगाने हैं कि क्या चीजें हम करें उसके लिए कि हमें रिजल्ट्स अच्छा मिले। आउटकम सबके लिए अलग होता है कैंसर में। दो सिमिलर कैंसर टाइप भी, दो सिमिलर पर्सन का कभी सेम नहीं होगा जर्नी। बट व्हाट वी कैन डू इन आवर हैंड, व्हाट इज बेस्ट इज टू इंश्योर दैट द जर्नी इज ब्यूटीफुल, जर्नी इज वंडरफुल। पेन नहीं है, पेन हो भी जाएगा लेकिन सफरिंग नहीं है। पेन के लिए हम फिर भी कुछ कर सकते हैं, बट जो जी इमोशनल मैम। मेंटल सफरिंग होती है वो नहीं होनी चाहिए। विल पावर को कैसे स्ट्रॉन्ग रखें, एक साथ में एक फैमिली की तरह कैसे हम साथ में रह करके उस सिचुएशन से, इट्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन, कांट इवन थिंक अबाउट इट। डेफिनेटली ये जब घर में किसी को होता है, इट्स मेसी, इट्स कॉम्प्लिकेटेड, वी ऑल नो दैट, एंड वी ऑल ट्राई अवर बेस्ट कि हम उससे बाहर आए। एंड वो 1 साल का जर्नी नहीं है, वो 5 साल का जर्नी नहीं है, वो 10 साल भी लग सकता है, वो 15 साल भी लग सकता है। So few very fortunate ones gets 10 years or 15 years of journey, and few maybe दो कुछ लोगों का सिर्फ 1-2 साल में जर्नी खत्म हो जाता है। सो फैजल, आपने इतना करेज, इतनी हिम्मत दिखा के अपनी फैमिली को सपोर्ट किया है। सो एंड योर जर्नी इटसेल्फ इज एन इंस्पिरेशन बाकी केयर गिवर्स के लिए कि आप किसी के घर में एक को होता है, आपके घर में दो को था, एंड बोथ आर वेरी क्लोज मेंबर्स, योर ब्रदर, योर मदर, एंड बट यू हैव कम आउट ऑफ इट। यू शुड बी प्राउड ऑफ इट कि मैंने उनके लिए सब कुछ किया, मैंने उनके लिए सब कुछ किया जो मेरे हाथ में था। एंड वेर एवर दे आर टुडे, वो जहाँ पे भी हैं, दे आर सो प्राउड ऑफ यू कि हमारे बेटे ने हमारे लिए लास्ट मोमेंट तक इतना कि हमें इतना कंफर्ट दिया। और दे आर फ्री ऑफ पेन, दे आर फ्री ऑफ ऑल द सफरिंग्स, दे आर वाचिंग यू, लुकिंग आउट फॉर यू, and they are sending lots of blessings, and they'll always be with you. So have that faith, and it's just commendable what you have done, so thank you. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Well, Yeah. Thank you, Faisal. Yeah. So Prakhar, yeah. So Prakhar, before we ask others about their experience, anything that you want to share with everybody? Yes, just one thing. Uh, See, cancer can be cured by removing the body part, but you have to stay positive. Whatever time you have in your life, whether one day, 2 day, live it large. एक line है आनंद मूवी के which I actually started opting for myself कि बाबू मोशाय जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं. So make it like that. It will make you really comfortable in your life. And अगर आपका मोटो सही है, आप एक दिन भी रहे तो it makes sense. आपकी लाइफ में रहता है कि हाँ मैंने कुछ अच्छा किया है, मैंने किसी के लिए कुछ अच्छा किया. So it's like that. Thank you. So that's all. Yeah, would like to hear from others about their experience of anything that they want to share about this circle or their own cancer journey. So we'll begin with Mehul. Hey, hi Dimple. Hey Prakhar. Dimple, you sure you want to start with me because फिर मेरा लंबा चलेगा. इसके इसके दो रीजंस है. एक तो प्रखर मेरे गांव वाला, पुणे का है. And second is he is also cancer survivor. So anyway, hi Prakhar. I'm also from Pune, basically from Pimpri. और डिम्पल को गुस्सा आता है जब मराठी में बात करें ना तो उसको अच्छा नहीं लगता. But anyway, I'll talk to you in Hindi and English. We can meet. I am in Wakad. So whenever you are free, let me know.
I'm in Wakad. We can meet. अरे वाकड़ मैं विप्रो में था. So now I'm in the US from last 7 years. But definitely when I come to Pune, I'll reach out to you. Anytime. And I'm a stage 4 throat cancer survivor. So I've also been through this, and I know how. Congratulations to you for making it so far and keeping a positive attitude, Babu Munshai. I like that. I agree with it. So, and I like the way you put it that you should not delay the treatment. मेरा भी stage 4 इसलिए हुआ क्योंकि I kept going to the local doctor जो अपना घर का doctor होता है. ये antibiotic, वो antibiotic, he kept changing and it grew. So that was a mistake. And secondly, I also agree that regular checkups करनी चाहिए because our body आजकल सब toxic खाते हैं हम, lifestyle is not good. So अगर जिंदा सर है तो है ना, सर सलामत तो पगड़ी आ जा रहा, अगर if you're not alive तो क्या करेंगे. But yeah, I agree completely, and I love the way you take one day at a time. It's the way actually every cancer survivor should live. कल का I think we are lucky because we know that we are going to die. लेकिन जो लोग कोविड से मर गए, जो एक्सीडेंट में चले गए, they are not that lucky like us. So हर एक नेगेटिव में अगर आप पॉजिटिव ढूंढ लेते हो तो that is good. Even whatever may come life में, so we all cancer survivors are ready to take it head on, no problem. But thank you, and definitely I'll come down to Pune. I'll take your number from Dimple, and बैठेंगे अपना वाकड़ में काफी अड्डे हैं मेरे तो we'll chat there. Thank you for connecting. Thank you so much, Mehul. Yeah, Faisal, would you like to share? आप कुछ share करना चाहेंगे अपने experience या circle के experience पे? No, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, Faisal. Wish you lots of strength and courage. Thank you. I would like to say something to Faisal, if it's okay. Yeah, Faisal, I just I'm sorry for what you've been through in life, but it's easy to say stay positive. Like, and I know it's not that simple. But ये इसमें से अपना जो बुरा हुआ है उसमें कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करो. Like if your brother, your mother passed away, so think that वो छूट गए सफरिंग से, कि वो अभी अच्छी जगह पे है. इनको जो सफर कर रहे हैं वो उनको नहीं करना पड़ रहा. जैसे प्रखर ने बोला कि अपने बॉडी में 2 पार्ट्स होते हैं, एक जहाँ से खाना अंदर जाता है, जहाँ से बाहर जाता है. मेरा खाना अंदर जाना मुश्किल है, इनका खाना बाहर जाना मुश्किल है. तो मतलब सफर हम इतने कर रहे, तो बट दे आर इन अ गुड प्लेस, दे आर वाचिंग यू. तो हमेशा ना पॉजिटिव रहो, उनसे माइंड से कनेक्ट करो, भले फिजिकली ना हो. तो आई थिंक दैट कैन हेल्प. जस्ट कीप टॉकिंग, खुद से बात करो, उनसे बात करो, बाकी लोगों को छोड़ दो. थैंक यू. दीपक जी, आप शेयर करेंगे? फैजल को बोलना है कि पॉजिटिव ऐसे रहना है. देखो मैं भी, मेरे यहाँ तो 3 केस हो चुके हैं. मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ दोनों. दीपक जी सॉरी, आपका फेस नहीं. हाँ अभी ठीक है. हाँ फैजल को वही बोलना है कि पॉजिटिव ऐसे रहा जाएगा. मेरे तो 3 केस है. मदर इन लॉ, फादर इन लॉ एक्सपायर हो गया, अभी वाइफ को हुआ है, स्टेज 4 है. लेकिन दो भी वो पॉजिटिव रहे. हम लोग घर में एक दूसरे से बात करें, सर्कल में पूरा सबसे बात करते रहे, तभी जाकर के पॉजिटिव बने हुए हम लोग. ये कोलोस्टोमी बैग का बताया तो मैंने देखा हुआ मेरी मदर इन लॉ का. मेरे घर पर ही मैं रखा था उनको, डेली मैं ही चेंज करता था. वाइफ तो डरती थी उसके नजदीक भी जाने को कि भाई नहीं मेरे से कुछ हो जाएगा, तो मैं ही दिन में 2 बार मैं खुद चेंज करके साफ क्लीन करवाता था. थैंक यू. जब लास्ट में मेरी मदर इन लॉ एक्सपायर हुई, मेरे पैर पर ही बैठे बैठे सो गई और एक्सपायर हो गई. पॉजिटिव वही सोचना है कि वो अपने अच्छी जगह पर गई है. अभी यहाँ से इनके जो सफरिंग थी वो उनकी खत्म हुई एटलीस्ट. इसमें जो सफरिंग, मेरे को मालूम है कि क्या सफरिंग है. कैंसर पेशेंट को क्या अंदर से सफरिंग है वो मुंह पर नहीं बोलते हैं, कई बार तो अपने मन में दबा के रखते हैं. राइट. थैंक यू दीपक जी. ओके, थैंक यू डिम्पल जी. थैंक यू. राजेंद्र जी, नमस्ते. Hello. हाय राजेंद्र जी. Yes, how are you? Fine.
Very good. Thank you. I just wanted to share my experience because I was also a colorectal cancer patient. Now, वो प्रखर जो दोनों को बताना चाहता हूँ कि अभी मेरे 5 साल पूरे हो गए हैं कैंसर के, और अभी जैसे फर्स्ट ईयर में जितना मैं खाना खाने में सभी कंट्रोल करता था, तो अभी डॉक्टर ने बोला कि नहीं अभी कुछ भी खा सकते हैं, फिर भी मैं थोड़ा कंट्रोल करता हूँ. लेकिन वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपने बॉडी चेकअप बताया ना, क्योंकि मैं तो हट्टा कट्टा था, कुछ नहीं था, करीब 40 साल से कसरत कर रहा था, 82 ऑनवर्ड्स, योगा, प्राणायाम, एरोबिक, स्विमिंग सब किया था, और ऐसे मुझे पता ही नहीं चलता कि मुझे कैंसर है. बट मेरी एक हैबिट थी कि एवरी ईयर आई यूज्ड टू गो फॉर अ बॉडी चेकअप, एंड वो कुछ नहीं था, फिर भी रेगुलर बॉडी चेकअप करने जब गया लास्ट मीन 2016 में, तभी जस्ट थोड़ा ब्लड आया, कल ब्लड आया, तो डॉक्टर ने कहा कि आप कोलोनोस्कोपी करवाओ, और कोलोनोस्कोपी करवाई तो कैंसर निकला. इट वाज स्टेज 3. Doctor also suggested that you may have to, your rectum may have to be removed, and you may have to go for a colostomy. But one of my doctor friend, close doctor friend, was in the operation with me, and he insisted the surgeon that possibly try that colonoscopy should be avoided. And I think he took more time because sometimes क्या होता है कि easy option for the doctor is to go for a colostomy because they do not want to take any risk. So if some risk is taken and colostomy can be avoided, that is my personal experience. And मेरा operation करीब 5-6 घंटे चला था, and colostomy was avoided. So this is one suggestion कि if at all you go for an operation, go for at least 1 or 2 opinion. That is very necessary. And if you are not satisfied with the answer of some doctor, you should definitely go and change the doctor. Because मेरी जब केमो चल रही थी, तो my doctor was no good because he was not giving enough time. He used to come for 15 seconds and go away, and I just prepare a list of queries, so he was not in a position to properly satisfy my queries. So I immediately changed my chemotherapy to another hospital where I got a good response. So these good suggestions are there that everyone, irrespective whether you have any symptoms or not, you should go for a body checkup every year. And Dimple, I would like to say you one thing, because you just narrated that you had a dream of that you got a cancer. So I think because you are so much associated with all cancer patient and other thing, so I would like also to suggest that little bit you divert your mind in the night, or especially before you go to sleep, because the reason is continuous thinking of cancer. That will take your subconscious mind with this topic, and you may get such dream. So I personally would like that you should not have such dream, because these are all very dangerous and horror. So it is better to divert, especially at the night time, at the sleep time. This is my personal suggestion, because I would like you to see always happy, because you are so smiling. So you should not have any such dream in future, right? Right. Thank you so much, Rajesh. In fact, I just started watching 1 or 2 seasons of some series on doctor. So मैंने 3 cases देखे और उसमें तीनों ही cases कैंसर के थे. तो I was thinking कि I'm watching this series to get some insights, and unfortunately, why all 3 cases are of cancer only? And he was like, maybe these are more complicated cases which they are trying to solve. Okay. That's what I watched when I was going to bed. No, but in the evening, especially at night, you should go for any light movie or light thing or different types of hobby, because you are doing a wonderful services. So we would always like, and you should always be blessed with positivity, and you should not have any such recurrence of dream. That is my personal wish. And I also wish that you should remain always very strong, right? Thank you so much, Rajendra ji. It's so good to see you after a long time. Thank you. Thank you very much. Would like to hear from Anuradha ji. Hi Dimple, hi Prakhar, hi everyone. प्रखर, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि इस साल में एक एनुअल चेकअप होना चाहिए सबका. तो उसके लिए हम लोग, वैसे मैं लोगों को, जैसे आपने बोला आपकी मैरिज एनिवर्सरी वाले दिन डायग्नोज हुआ था, तो मैं जनरली लोगों को कहती हूँ कि अपनी फैमिली में हमको जब भी बर्थडे गिफ्ट्स देने हो या कोई भी ओकेजन है उस पर गिफ्ट देना है, तो हमको एक हेल्थ चेकअप दे देना चाहिए. उसमें क्या हो जाता है, वो मैंडेटरी हो जाता है. अगर हमने गिफ्ट कर दिया तो पर्सन इज गोइंग टू गेट इट डन. तो हमारे यहाँ हम लोग उस मामले में बहुत नेग्लिजेंस रखते हैं कि अरे यार कौन बॉडी चेकअप कराए.
अभी ये अच्छा हो गया कि आजकल कॉर्पोरेट सेक्टर में जो लोग वर्क करते हैं उनके लिए तो इट्स कंपलसरी कि एक बार आपको करना ही है, मतलब बॉडी चेकअप के लिए जाना ही है। बट और जो जनरल पब्लिक के लिए या इंदौर में जैसे बहुत बिजनेस वाले लोग हैं वो, पर हम लोग इतना ध्यान नहीं रखते हैं, तो इसलिए आई सजेस्ट कि ऐसा करना चाहिए ताकि आपके घर के लोग डेफिनेटली चेकअप के लिए जाएं, और अर्ली डायग्नोसिस हो तो सबको ही अच्छा लगता है। और मैं भी इंदौर से ही हूँ प्रखर, मैं भी एक एमबीसी पेशेंट हूँ, तो आप जब भी इंदौर होंगे तो आई वुड लाइक टू मीट ऐसा। Wonderful. Thank you थैंक so यू। much. Thank you, Anuradha ji. And so good to hear different experiences, because it's a learning, especially आज का session काफी informative था and inspiring था, काफी चीजें सीखने को मिली. I'm sure कि many patients would get benefit of it, and कि situations, surgeries like this, cases like this, how do we really work? How do we really take decisions? Where do we find the information which is trustworthy, which is also very convenient, accessible, and affordable? So wonderful, wonderful. And Prakhar, just I'm trying, yeah, Prakhar. So to share, yeah. Yes, two things I want to tell. One is take medical insurance, minimum 10 lakhs. It is a costly affair. I was covered, that's fine, but go ahead. Whoever is watching this, whoever is going to watch this in future, I recommend go for medical insurance. It is just an investment on yourself. True. Because Very it is more than 15 lakhs of cost which occurred to me, and I have seen people who are struggling for it. So one thing is this. Second thing, what I told about yearly checkup, make a file of everything, because I read one story of one particular guy who has a leukemia, that is fourth stage of blood cancer. Sorry, he started having a blood cancer and it got immediately and that guy saved his life, because blood cancer survivors are very less in the world. So that's what I just want to tell. Thank you so much, Prakhar, and thanks everyone for the wonderful session and creating this safe and healing space for others to be able to freely share their experiences, their learnings and insights. काफी अच्छा लगता है सेशन होस्ट करके, अटेंड करके आप सब लोगों के साथ में, बिकॉज हमेशा नया एक्सपीरियंस होता है, एक नए थॉट्स आते हैं कि और हम क्या कर सकते हैं. And always good to see wonderful people trying to do amazing things to help each other. So great, we will connect again on Saturday in Healing Circle Talks. And so good to see many of you also joining Zen Living Talks, where we Zen Living Activities rather, जहाँ पे हम लोग कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं पेशेंट्स, सर्वाइवर्स एंड केयरगिवर्स के लिए. एंड थैंक्स टू एनी फॉर ब्यूटीफुली होस्टिंग सच सेशंस. जहाँ this week we had session on breathing, जहाँ पे वर्तिका ने ब्रीदिंग के ऊपर एक सेशन लिया था. एंड वी लुक फॉरवर्ड टू मेनी सच सेशंस जहाँ पे पेशेंट्स को डायरेक्शन भी मिले और हेल्प भी मिले. सो दैट इज द पर्पज वाई वी स्टार्टेड ज़ेन लिविंग, ताकि उसमें हम कुछ एक्टिविटी करें विच इज रिलेटेड टू हेल्थ एंड हीलिंग. सो इट कुड बी मेडिटेशन, इट कुड बी योगा, इट कुड बी ब्रीदिंग, इट कुड बी इमेजरी, इट कुड बी राइट टू हील, इट कुड बी एनीथिंग. सो अगर आप में से भी कोई भी होस्ट करना चाहता है सेशन किसी हीलिंग थेरेपी पे, या फिर आप किसी को जानते हैं जो करना चाहेंगे पेशेंट्स के लिए, वुड लव टू कनेक्ट. एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीबॉडी. थैंक यू, टेक केयर. I will share Prakhar's contact. Thank you. Bye. Thank you.